Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इंग्लिश टेस्ट नंबर 10। इंग्लिश टेस्ट नंबर 10 कवर करेगा तमाम एकेडमिक टेस्ट, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, कैडेट कॉलेजेस, एडमिशन प्रिपरेशन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश एकेडमिक grammar tests for commissioning in Pakistan Army, Pakistan Navy as a commissioned officer through permanent commission, through short services commission, and through special purposes short service commission. Airwoman, female medical assistant of Pakistan Air Force Trade, Aero Trades, Aero Sports, ground combatier, the fighting trades of Pakistan Air Force, provost related to the security, mechanical transport driver, firefighter, sportsman, technical cadet course, army medical corps, MD-CAT, armed forces nursing services, lady cadet course, Pakistan military academy, Kakul, commissioning tests, Pakistan Navy cadet test, inter services selection board, Pakistan Navy, sailors, marines, technicians, civilians selection test for joining पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसको आखिर तक जरूर देखिए। और हमारी वीडियो के अगले सेगमेंट में जाने से पहले हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तमाम ग्रुप्स के अंदर, ताकि इससे तमाम लोगों का फायदा हो। For today's topics, that is the definition of the sentence. That how would you define a sentence? If any questions is asked to you, or if any definition is given in any type of the test which is related to the academic test for your selection in Pakistan Armed Forces, so how would you define the sentence? Here we see a group of words. Look here at the screen that we see. I will highlight this with the help of pointer and highlighter as well. You can see. Look here, just I want to tell you, laser pointer. Now there is the laser pointer, a group of words that makes a complete thought or sense is called a sentence. For example, G, you arrived late, why are you crying, and please open the door. Now we come to the conclusion that if we come across certain group of words, ठीक है जी, उर्दू में भी थोड़ा सा साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका मफहूम आपको समझ आ जाए, मानी और मतलब आपको समझ आ जाए, तो ऐसे फ़िक्रात को आप कहेंगे, ऐसे जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं उनको आप कहेंगे सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हेयर वी से दैट व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्लीज़ ओपन द डोर। नाउ दीज आर द टू सेंटेंसेस विच वी हैव यूज्ड एज एन एग्जांपल। Now we see a sentence generally consists of 2 or 3 parts. Maximum आप देख सकते हैं जी एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, और 2 पार्ट्स पे भी आपका सेंटेंस जो होता है वो कंसिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, वर्ब है, और क्या है, नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट। होता है कि कुछ सेंटेंसेस के सिर्फ सब्जेक्ट ही होते हैं, साथ ही उनका वर्ब होता है, बट उनका जो बाकी प्रेडिकेट है, बाकी सेंटेंस है का जो पार्ट है, ऑब्जेक्ट वगैरह, वो नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस को भी आप सेंटेंस कह सकते हैं। बट वी सी हेयर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट। उर्दू जबान में हम एक सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। द डूअर इन अ सेंटेंस, यहाँ पे DOER डूअर है, डोर नहीं है। नाउ यहाँ हम इसको पढ़ेंगे ई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो और उनके लिए आसानी रहे जी। इसको मैं पेन की मदद से यहाँ से काट के DOE कर देता हूँ, ठीक है, डूअर। ये आप नोट कर लें, हियर इट वुड बी अ डूअर जी। द डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी काम के करने वाला जो है वो क्या है, आपका फाइल है। उर्दू जबान में उसको हम क्या कहते हैं, फाइल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फाइल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। दिस इज नोन एज द फाइल। Doer of any action is called the subject, and it's always at the beginning of any sentence. So the second and the most vital part, the important part, which is playing as the backbone role of a sentence, that is known as the verb. Now, how we can define a verb? A verb, it is a word which shows an action in a sentence, is called the verb. इन उर्दू लैंग्वेज वी से फेल जी। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। फे एन लाम फेल जी। उर्दू जबान में फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना
वक्त के लिहाज से पाया जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फेल. द वर्ड विच शोज एनी एक्शंस according to the time, this action may be done in the past or shall be done in the past, or that is being done in the present time. So these are the three times which are related to your all actions. So here we see the third part of a sentence, that is known as the object. The object, how we can define this word object in Urdu language? We say मफऊल. जी, उर्दू ज़बान में हम इसे क्या कहते हैं? मफऊल. यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ मफऊल, मीम फे ऐन वाओ lam maf'ul. Ji, this is a word which is known as the object. The receiver of an action in a sentence is called the object. जी, the call is called an object भी कह सकते हैं, बट स्पेसिफाई करेंगे तो आप उसके लिए दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, ठीक है, जिस पर कोई काम वाक्य हो, कोई एक्शन वाक्य हो, एक्शन का रिसीव करने वाला हमेशा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज अ सेंटेंस, ही सा ब्यूटीफुल फ्लावर. जी, ही इसमें सब्जेक्ट है, सा इसमें वर्ब है, ए ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है? जी, इसमें क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस ही क्या है? जी, सब्जेक्ट है, सा इसमें वर्ब है, अ ब्यूटीफुल फ्लावर मैंने आपको बता दिया ये क्या है? आपका मफूल है. दीज आर द थ्री, यू कैन से, द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस which we must learn and we must know about the, you can say, structure of a sentence, that how it is structured and how it is made. Now we come to see the definition of a phrase. A group of words which does not make a complete sense is called a phrase. जी, phrase क्या होता है? ये अल्फाज का मजमूआ तो है, बट आपको मुकम्मल सेंस नहीं देगा, कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा, पूरे मानी और मतलब आपको नहीं समझाएगा, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज द part of a sentence. Some of the part of the sentence is also called a phrase. It's neither contain subject nor verb. उसके अंदर ना ही कोई सब्जेक्ट होता है ना ही उसके अंदर कोई वर्ब होता है, यानी कि बाकी हिस्सा जो है ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग जो है, या बाकी पोर्शन ऑफ द सेंटेंस है एक्सक्लूडिंग द वर्ब एंड द सब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रेज. Okay, you have got it, I think. Now see some example here in this in the playground. इस playground में अगर आप देखें जी, in the playground it's you can say it's an object, and behind the wall here we can see in these words that there is no verb and there is no subject, and ultimately we can say it's a phrase, into the water. Now into the water, here we can see that three certain words are being used. Into, it's a use as the preposition, these article, word is known as the noun. Here it can be used as more other than the subject and the verb. I think you have got this point, that what is the phrase, and you must be knowing that what is the phrase. In Urdu language I have also explained to you that what is the phrase, and we have gone through in the detail. Now we proceed to the second part of this lesson. This lesson is the definition of a clause. जी, clause किसे कहते हैं, उसकी क्या तारीफ है? A group of words that consist of subject and the predicate and is used as the part of a sentence is called a clause. For example, the rain had stopped when we reached there. In the above sentence, when we reach there is a clause between it has the subject and we, and the predicate reach there. So please note down, it's a group of words. ये अल्फाज का कैसा मजमूआ है, that contains a subject. जी, जिसके अंदर क्या है जी, एक सब्जेक्ट भी कंटेन होता है एंड प्रेडिकेट और एक प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सो यू मस्ट नो दिस, अ न्यू वर्ड फॉर यू, that what is predicate in English language. You will come across this terminology in the daily life, and you must be knowing that this is the predicate, and it's used as the part of a sentence is called a clause. Okay, you got this view that a group of words that contains a subject, उसके अंदर एक subject भी होता है and a predicate, and there is always a predicate other than the part of the subject and the verb, is that's also known as the predicate, and it's always used as the part of the sentence. So please, the rain had stopped when we reached there. These are two examples which you have quoted in this sentence, and these above sentences we have reached there. It's a clause between it has a subject and we and the predicate reach there. I think you have got this view. So what is the definition of a clause? Now we proceed to the next of the sentence by the identification. जी, identification के लिहाज से हम देखना चाहते हैं कि कितनी types हैं एक sentence की. A sentence is a group of words that makes a complete sense. This you can say a very short and the brief definition of this sentence. Here we shall go through all the types of the sentence in a detail. That first one is the statement or the assertive sentence. In Urdu language we can say सादा जुमले और सादा फिक्रे. A sentence that declares or states something is called a declarative sentence.
एक ऐसा फिक्र जो कि सिंपल आपको बयान दे, डिक्लेयर करे, कुछ चीजें बताए, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट और फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक एंड दिस इज अ बिल्डिंग, सिंपल ये आपको स्टेटमेंट दी जा रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज नोन एज द सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और नॉमिनेटिव सेंटेंस। नंबर 2 ऑफ द पार्ट ऑफ दिस you can say the type of the sentences, that is the question or interrogative sentences. In Urdu language we say सवालिया जुमले, सवालिया फिक्रे, जिनमें आपसे कोई डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको हम कहते हैं सवालिया फिक्रे. But in English we see the sentence that ask a question is called an interrogative sentence or a question, and it always ends with a question mark. So please, you must know that in an interrogative sentence, all the times a direct question will be asked from you. For example, all the interrogative sentence shall be starting with the help of the helping verb, that is, am, or, was, were, has, have, had, can, could, may, might, will, shall, would, should, ought to, do, did, does. Okay? These are all the, you can say, the helping verbs which can be used in your interrogative sentence. But as far as the direct questions are concerned, such type of sentences shall also be started with the interrogative pronoun, that when, why, where, who, whose, whom, which, what. So these are known as the interrogative pronouns. So what are you doing here? For example, we see that this is an example of an interrogative sentence. Ultimately हम इस बात के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जहां पे जिस सेंटेंस के अंदर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाएं उसी को ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बाय आइडेंटिफिकेशन वी से दैट इज द कमांड और द इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंस द सेंटेंस व्हिच हैज शो स्ट्रांग इमोशंस. जी, अब हमने देखना है जो चौथी हमारी टाइप है, जो आपके सामने मैंने रिवर्स करके स्क्रीन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये क्या है? वो है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तिजाबिया फिक्रे. जी, इस्तिजाबिया फिक्रे हमेशा आपको खुशी की, गम की, कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर देते हैं, एक्साइटमेंट की, तो जिससे आपके ऊपर अल्टीमेटली फिलबदी आपके मुंह से अल्फाज ऐसे निकलते हैं जैसे हुर्रा, आहा, वावा, ब्रेवो, एलास, उफ, टश टश. ठीक है, ये सारे क्या है आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनमें हमेशा इनका इस्तेमाल किया जाता है. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस को उर्दू में हम कहते हैं दुआये फिक्रे. ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और प्रे इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव. जी, जिसके अंदर किसी ख्वाहिश का या प्रेयर का, दुआ का जिक्र किया गया हो, तो ऐसे तमाम फिक्रात को आप कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, द मदर सेड टू हिज सन, मे यू लिव लॉन्ग. माय टीचर सेड टू मी, मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस. सो दीज आर, you can say, the sudden feelings. ठीक है, if you come across with the some sudden sad feelings, alas, her husband has died, so this is a very bad news for her. So so such type of, you can say, sentences will also fall in the category of the optative sentence. The next one of today's topic, that is the type of the sentences by structure. पहले हमने पढ़ा है कि पहचान के लिहाज से फिक्रात की कितनी किस्में. अब हम जरा देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कितनी किस्में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. अगर उनके स्ट्रक्चर को ही देखा जाए तो वहां पे आपको 3 किस्म की इसकी टाइप्स मिलेंगी. सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट ओनली, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट, दैट इज, यू कैन से, combination of object and the verb is known as the predicate. She is my neighbor. कंपाउंड सेंटेंस. अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है. कंपाउंड सेंटेंस ये है कि जनाब, एक कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक फैन बॉयज. ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा फार्मूला आपके लिए फैन बॉयज का ना, फार्मूला इसको मैं कहूँगा ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाए. फार्मूला क्या है जनाब? वो फैन बॉयज का फार्मूला, एफ किसके लिए स्टैंड करता है? फॉर के लिए. ये जो फॉर है, ठीक है, इसके लिए स्टैंड करता है एफ फॉर. यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया. ए शैल बी यूज्ड फॉर एंड. ठीक है जी, ए एंड के लिए यूज करता है. एन शैल बी यूज्ड फॉर नॉर, उसके लिए नॉर. बी शैल बी यूज्ड फॉर बट, उसके लिए. एंड देन ओ शैल बी यूज्ड फॉर ओ आर, एंड वाई फॉर येट, एंड एस फॉर सो. तो अगर इसको सारे शुरू से पढ़े आप, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट वर्ड है उनसे क्या बनता है? फैन बॉयज. फैन बॉयज. तो ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है ताकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ताकि वो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें. ठीक है जी, और इनको अच्छे तरीके से जब आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी इनको याद करने में और फर्दर आप इसको एक्सप्लेन करने में. अदर देन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है, वो व्हेन है, वेयर है, टिल है, अनटिल है, अनलेस है, उसके बाद जनाब इफ है, बिकॉज है, हु है, हुज है, हुम है, या हुम है.
ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और अभी हम आपके सामने जो स्टडी कर रहे हैं ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और सबऑर्डिनेटिंग जो आपके कंजंक्शंस हैं इनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या है, इसकी हमने कुछ मिसालें भी दे दी हैं, ठीक है। अली इज अ गुड एंड रिच बाय, अली बहुत अच्छा और अमीर लड़का है। हम्माद हैज bought a new dress but she has not worn it yet, ठीक है जी। तो उन्होंने अभी तक ड्रेस परचेज तो कर लिया बट उन्होंने अभी तक वोर नहीं किया है। Sentences. Complex sentences also has one independent class and one or more than independent classes combined with this subordinate conjunction. यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात हो रही है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है, जिस तरह के अनलेस, अनटिल, हूएवर, व्हेन, वेयर, हु, हुज, इफ वगैरह जो है ये सारे क्या है आपके कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आई प्लेड फुटबॉल विच इज अ कॉमन गेम, ठीक है। विच जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग इंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कंजंक्शन के साथ। द पेशेंट हैज डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। These are all about the certain types of the sentence which we have studied in today's lecture. I do hope that you might have learned a lot from today's video. So please keep on watching our official and this educational channel, that is the Shine Leaders Academy, for the preparation of all academic tests, including your matriculation and the intermediate level. So these videos which are being made on the certain tests which have been collected, which have been prepared with the all those actual questions which are being repeated in the last 5 years papers for selection for Pakistan Army, Air Force, Navy and all the civilian departments. So please try to learn the grammar which we have taught to you today. Inshallah, you will qualify for your academic test, especially in the English subject. May Allah bless you. Thank you very much. And you'll चाहते हैं हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने तमाम ग्रुप्स के साथ, ताकि इल्म की ये जो शम्मा है ये हमेशा रोशन रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।